morning, children. Children, as we know that we are going through chapter 5 from Flamingo, and the title of the chapter is Indigo. Children, this chapter is written by Louis Fisher, and in the previous lectures we have read that the author has given the description of Gandhi's visit to Champaran, as on the request of Rajkumar Shukla, Gandhi visited Champaran and struggled against the British landlords for the sake of sharecroppers of Champaran. And we have read that when Gandhi reached Champaran, he wanted to meet the secretary of the British Landlords Association, but the secretary told him that he would give no information to an outsider. Then he visited British official commissioner, and the commissioner also misbehaved with him. And we have already read that when Gandhi received a summons from the court to appear in the court the next day, he became worried, could not sleep throughout the night, and with that he sent a telegraph to Rajendra Prasad to come to him. He also sent several instructions to the ashram, and he also wired a full report to the viceroy. So children, today we shall start from the third paragraph of page number 50. Morning found the town of Motihari black with peasants. देखिए, in the morning time the town of Motihari was black with the peasants, meaning thereby thousands of peasants, thousands of farmers came there, as they had heard that someone came there to struggle from their behalf. So children, so thousands of the peasants were there, and we can say the town of Motihari black with peasants. देखिए, अगले दिन सुबह क्या हुआ, मोतीहारी जो टाउन था वो बहुत सारे किसानों की भीड़ से बिल्कुल काला प्रतीत हो रहा था, मीनिंग देयर बाई thousands of black heads were there. They did not know Gandhi's record in South Africa, although they did not know Gandhi's record in South Africa. हालांकि वो गांधी का साउथ अफ्रीका में जो रिकॉर्ड था उसके बारे में नहीं जानते थे. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities, and only they had heard that a Mahatma who came there and who wanted to help those peasants was in trouble with the officials.
क्योंकि उन सारे किसानों ने ये सुन रखा था कि एक महात्मा जो वहाँ पर आया था उनकी हेल्प करने के लिए, तो अथॉरिटीज ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था। तो देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस was the beginning of their liberation from fear of the British. So the author tells us that when thousands of farmers had gathered there around the courthouse for the demonstration, तो देखिए लेखक कहता है कि जब हजारों की संख्या में किसान अपना स्वेच्छा से प्रदर्शन करने के लिए, जब स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोर्ट हाउस के चारों ओर एकत्रित हो गए, तो अकॉर्डिंग टू दी ऑथर कि दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। वो अंग्रेज़ों के डर पर मुक्ति पाने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए उनकी एक तरह से आरंभ था, शुरुआत थी। मीनिंग देयर बाई इट वाज देयर beginning of the freedom from the fear of the British government. Now see, the officials felt powerless without Gandhi's cooperation. अब देखिए जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, they were feeling means helpless, and that was the only reason they wanted गांधीज कोऑपरेशन। अब देखिए जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना अपने आप को पावरलेस महसूस करने लगे, हेल्पलेस महसूस करने लगे। तो ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, गांधी हेल्प देम टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द क्राउड। देखिए गांधी ने उनको क्राउड को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने में मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, but with all these things Gandhi remained polite and friendly with them. लेकिन साथ ही साथ गांधी उनके साथ पोलाइट और फ्रेंडली रहे। He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. तो देखिए विद दैट गांधी वाज ऑल्सो गिविंग द कंक्रीट प्रूफ टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। लेकिन इसी के साथ ही साथ गांधी उन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को इस बात का कंक्रीट प्रूफ भी दे रहे थे कि वॉट एवर देयर माइट वॉज देयर, might strength for the strength, so that their might hitherto dreaded and unquestioned, and that was challenged by the people of India. और साथ ही साथ वो इस बात का ब्रिटिश ऑफिसर्स को प्रूफ दे रहे थे कि जो उनकी शक्ति थी, जो भारतीय लोगों को भयभीत करने वाली थी, अनक्वेश्चन थी, अब उनकी शक्ति को भारतीयों के द्वारा चैलेंज कर दिया गया था। The government was baffled. The government was also confused what to do or what not to do. अब देखिए जो सरकार थी वो भी एकदम भ्रमित हो गई। And the prosecutor requested the judge to postpone the trial. The prosecutor also requested the judge that he should postpone the trial. Prosecutor ने भी जज से रिक्वेस्ट की कि वो मुकदमे को पोस्टपोन कर दे, स्थगित कर दे। Apparently the authorities wished to consult their superiors. In the meantime, the authorities also wished to consult their superiors. और इसी दौरान जो अथॉरिटीज थी वो भी अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते थे।
So children, that was the situation that took place that time. Gandhi protested against the delay. अब देखिए गांधी ने whatever delay was being done, तो ही protested against it. देखिए गांधी जी ने इस डिले के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया, विरोध किया इसका. He read a statement pleading guilty and he also read a statement in which he was going to find the court guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties on the one hand and not to set a bad example as a lawbreaker on the other hand, to render the humanitarian and national service. तो देखिए ऑन वन हैंड गांधी फाउंड द कोर्ट that it was not fulfilling its duty, and on the other hand he did not want to set an example as a lawbreaker. देखिए एक और तो उन्होंने कोर्ट को गिल्टी ठहराते हुए, दोषी ठहराते हुए कहा कि कोर्ट जानबूझ के देरी कर रहा था, और दूसरी ओर वो एक लॉ ब्रेकर के एग्जाम्पल को प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे. He did not want to present a bad example as a lawbreaker because he had come there to render the humanitarian and national service. क्योंकि वो वहाँ पर एक मानवीय और एक राष्ट्रीय सेवा के लिए आए थे. He disregarded the order to leave. देखिए उन्होंने वहाँ से जाने का जो ऑर्डर था उसे डिसरिगार्ड किया. He did not follow the order given by the messenger of the police superintendent. He remained there in Champaran. He did not leave. So we can say that he did not leave Champaran. He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. देखिए उन्होंने वहाँ से जाने का जो ऑर्डर था उसे डिसरिगार्ड किया, उसका उल्लंघन किया, उसका असम्मान किया. केवल इसलिए नहीं कि वो लॉफुल अथॉरिटी का सम्मान नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वो उससे भी जो हायर लॉ है उसका सम्मान करते थे. और ये जो हायर लॉ है वो वॉइस ऑफ कंसाइंस है, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज है. तो ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू. तो ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू फॉर दैट. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. अब देखिए in the meantime the magistrate announced, gave the declaration. देखिए इसके बाद जो मैजिस्ट्रेट था उसने अनाउंस किया कि that he would pronounce sentence after a 2-hour recess, कि वो 2 घंटे के रेसेस के बाद जजमेंट देगा. He would give his judgment after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. और उसने गांधी जी से कहा कि वो 120 मिनट्स में अपनी बेल का इंतजाम करें, अपनी मीन्स जमानत का इंतजाम कर लें. तो गांधी refused to make any kind of arrangement of his bail. देखिए गांधी जी ने किसी भी प्रकार की
जमानत कराने की व्यवस्था करने के बारे में इनकार कर दिया। तो द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो जज ने गांधी को बिना बेल के रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. देखिए, when again the court reconvened or started, came into action, the judge said he would not deliver the judgment for several days. देखिए, इसके बाद जब कोर्ट दोबारा शुरू हुआ तो जज ने कहा कि वो कई दिनों तक जजमेंट नहीं देगा। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. Meanwhile, he asked Gandhi to remain at liberty. That Gandhi would be free for the remaining time. He asked Gandhi that he would be allowed to live freely. Okay, students, now we shall see the next lecture in the next video. Thank you.